Okay, so I'm back for the advanced level students and intermediate level. So now let's see how many people are going to be a little keen and active to learn. The timing thing is getting a little confusing because of different students opting for different timings. So if I don't see people turning up in time, then there'll be no point continuing with this. I'll just do it as a recording and leave it. Okay, so probably the confusion is getting cleared. Some person is logged in. Anyway, hello, may I know who's this? Okay, Pooja, hello. Good to see you getting punctual. We're just waiting for more people to join and then we'll take take it from your side. ये सतयुग से चला आ रहा है कि वो बहुत बार सवाल भी उठ जाता है कि अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, मतलब जो सही है। अब जैसे आप पंक्चुअल है, आप टाइम से आ गई, और मतलब एक दो जने जो टाइम से आए, आपको वेट करना पड़ेगा औरों का। तो बस ज़्यादा नहीं, एक आधे मिनट देखते हैं और वरना फिर हम स्टार्ट कर लेंगे। तो अगर आप दो जने भी हैं और एकदम कंसिस्टेंट हैं, बीच में आप कोई ब्रेक नहीं लेते, तो मैं आप दो से भी स्टार्ट कर दूंगी, बिकॉज मुझे भी देखना है कि पंक्चुअलिटी वैल्यू रखती है कि नहीं आप एक स्टूडेंट्स की लाइफ में। तो जस्ट अ कपल ऑफ मिनट्स एंड वील गो हेड, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कितने लोग रेगुलर रहेंगे। ठीक है, और दूसरा बंदा कौन था? हु इज द अदर पर्सन? आप भी जरा बताइए, आप कौन पंक्चुअल बंदे हैं? मे बी कोई शाय नेचर वाला होगा, नॉट ट्राइंग टू डिस्क्लोज। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिनको देखना होगा वो बाद में देख लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सर्टेन सिंपल थिंग्स व्हिच इज, आप अगर थोड़ा अच्छे स्टाइल में बोलना चाहते हैं कि उसको गुस्सा बहुत आता है, और टू गेट एंग्री, सो यू कैन से टू हैव अ बैड टेम्पर। लिखिए, टू गेट एंग्री is in advanced level earning, in advanced level you can say like this: to have a bad temper. Next is to be a bull in Chinatown. To be a bull in Chinatown. इसका क्या मतलब हुआ? To be a bull in Chinatown, it means to feel awkward. आप थोड़ा awkward feel करते हैं, out of place feel करते हैं, तो आप उसको कहेंगे to be a bull in Chinatown. Next is, if you tell someone that you have a heart of gold, आप किसी को कहते हैं that you have a heart of gold, then it means you mean to tell that person or say to that person that he is very generous or kind. He is very generous or kind. Next, ready to roll.
Ready to roll, R-O-L-L. Ready to roll means ready to start soon. Ready to start soon. अगर कोई ज्यादा लेट होते हैं, if it is too late, T-O-O, too late, you can say miss the boat. Miss the boat. To miss the boat is too late. अभी कोई लेट आया और फिर वो कुछ पूछेगा तो हम कह सकते हैं you missed the boat. Next is to sleep. To sleep को आप किस तरह से थोड़े बेटर स्टाइल में कह सकते हैं इंग्लिश में? To hit the sack. To hit the sack. S-A-C-K. To have, next one, to have a Spanish fever. To have a Spanish fever means to get angry quickly. आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है तो you can say, अरे what to say, you know, he has Spanish fever. जल्दी गुस्सा आता है उसको. Next is, when you stop working, how can you say that? When you stop working, you can say, I'm calling it a day. तो आप आगे मीनिंग लिखिए. Stop working के आगे to call it a day. To call it a day. Next, अगर आप कैलकुलेट वर्ड यूज नहीं करना चाहते, आप ये नहीं कहना चाहते कि कैलकुलेट दिस, सो यू कैन ऑल्सो यूज एड अप. जोड़ने के लिए ज्यादातर एड अप, ADDUP, एड अप. नेक्स्ट इज रिड्यूस के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? जैसे अगर आपको कहना हो हाउ डू आई रिड्यूस माई बेली फैट, यानी जो पेट के पास चर्बी जमा हो जाती है, बेली फैट उसको कहते हैं, उसको कैसे कम करें? सो हाउ डू आई रिड्यूस, तो आप रिड्यूस की जगह बोल सकते हैं कट डाउन. कट डाउन. How do I cut down on my belly fat? How can I cut down on my belly fat? How can I cut down on my fat? Right? Next is when you execute something, यानी आप किसी चीज को लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट, उसको आप एक और बेटर इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? कैरी आउट. Carry out. You can say the army ने बड़ा अच्छा एग्जीक्यूट किया अटैक दुश्मनों पे. The army carried out a successful attack. Next is, आपको किसी चीज को कंटिन्यू करना है तो आप बेटर वे में कह सकते हैं. कंटिन्यू के लिए आप कह सकते हैं कैरी ऑन. प्लीज कैरी ऑन. प्लीज कंटिन्यू की जगह प्लीज कैरी ऑन. अब एस्केप होता है बचना. तो अगर आप किसी चीज से बच रहे हैं तो उसको आप कैसे एडवांस लेवल में कहेंगे? गेट अवे. गेट अवे. द थीफ मैनेज्ड टू गेट अवे विद द ज्वेलरी. The robbers managed to get away with the jewelry. कोई उन्होंने चोरी कर ली ज्वेलरी की और वो उससे लेके भाग लिए, बच गए, तो managed to get away. To talk turkey. What does it mean when you say to talk turkey? TUR ये जगह के ऊपर है. जैसे बोलेन चाइना टाउन था, ऐसे ही to talk turkey, TURKEY. To talk turkey means to talk directly. तो कहते हैं चलो भाई हमारा मतभेद था, तूने उसके लिए ऐसा कुछ कहा, उसने तेरे लिए कुछ कहा, चल एक काम करते हैं
लेट्स टॉक टर्की, मतलब डायरेक्टली बात करते हैं, सीधा सीधा सामने बोलते हैं, लेट्स टॉक टर्की। रन आउट मीन्स कुछ थोड़ा जब बचता है, जैसे वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी वर रनिंग आउट ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड द सेशन इवन विद लेस स्टूडेंट्स। रन आउट मीन्स थोड़ी चीज बचना। Have, you can write in English, run out, have some left. Next one is look for. Look for, what is it? Excuse me. Look for means to try to find. कोई चीज आप ढूंढने की कोशिश करते हैं, to try to find. What are you looking for? क्या ढूंढ रहे हो आप? उसको वहां क्यों नहीं देखते? Why don't you look for her there? कोई छोटी बच्ची है घर में, खेलते खेलते बच्चे छुप भी जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, तो कहते हैं उसको गार्डन में क्यों नहीं ढूंढते आप? Why don't you look for her in the garden? आप किस तरह का पार्टनर ढूंढ रहे हैं? What kind of a partner are you looking for? Next, give up. Give up is to leave hope. उम्मीद छोड़ देना। Why are you giving up so early in your career? आप उससे उम्मीद क्यों छोड़ रहे हैं? या जो भी आप इस तरह से, तो उम्मीद रखना, have hope, उम्मीद ना रखना, give up. You should not give up. Next, kick the bucket. Kick the bucket. It means to die. D-I-E. To die. To have a ball. B-A-L-L. To have a ball. It means to enjoy a lot. तो आप कई बार ऐसे बोलते हैं, they're having a ball. Means काफी enjoy कर रहे हैं. To enjoy a lot. To go the extra mile. Hello. To go the extra mile, which means to put in extra effort. To put in extra effort. Next is this, some of it we're just revising. So, cut and dried. आपको बोलता है, वो it was all cut and dried. Cut and dried means already decided. Already decided. वैसे ये वाली तो यहाँ पे भी कहावत लागू हो सकती है। To cast pearls before, मतलब किसी को गाली देने का इंटेंशन नहीं, बट मीनिंग समझिएगा। इट इज नॉट दैट किसी के लिए बोला जा रहा है अपशब्द, बट ये कहावत ही है जिसके अंदर ऐसे वर्ड्स है, तो उसको समझिएगा। टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन्स। टू कास्ट पर्ल्स, P-E-A-R-L-S, before swines, S-W-I-N-E-S. To cast pearls before swines means to offer something to someone who doesn't recognize its worth. To offer something to someone who doesn't recognize its worth. किसी ऐसे को वो चीज सौंपना जिसको उसकी कीमत की कदर नहीं है। तो ये है टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन्स। अब कहीं आप ऐसी अच्छी चीजें बता रहे हैं जहां इसकी कोई कदर नहीं कर रहा, तो कहते हैं व्हाई आर यू कास्टिंग द पर्ल्स बिफोर द स्वाइन्स? क्यों ऐसे लोगों को वो चीज दे रहे हो जिसकी वैल्यू ही नहीं पता, चाहे वो ज्ञान ही क्यों ना हो। ठीक है। कॉल नेम्स। आई जस्ट हेट इट व्हेन शी कॉल्स हर हस्बैंड नेम्स, यानी गाली देना। टू अब्यूज,
to abuse. Next, cry over spilt milk. Cry over spilt milk. So इसका मीनिंग है to regret uselessly. Uselessly. ओके, ये तो आपने भी सुना ही होगा कहीं ना कहीं, काउच पोटैटो. काउच पोटैटो क्या मीनिंग हुआ? Someone who likes to keep watching TV and is very lazy. तो आप बोल सकते हैं she's such a couch potato. I tell you. ये थोड़ा स्टाइल में लोग बोलते हैं. Child's play. Child's play means a very easy task. For me, it was a child's play to teach basics of English grammar. यानी something that is very easy to do. जैसे आप केक वॉक भी बोलते हैं, पीस ऑफ केक भी बोलते हैं. नेक्स्ट लिखिए स्मैश हिट. स्मैश हिट. This movie was a smash hit. Means big success. The movie, Salman Khan's movie, जो भी नाम ले आप, was a smash hit. मैंने प्यार किया was a smash hit. यानी successful, big success. In hot water. In hot water. हेलो बेटा, आप लिखते रहिए जो मैं बता रही हूं साथ साथ. इन हॉट वाटर मीन्स इन ट्रबल, मुसीबत में. अगर आप कहीं भी किसी के लिए सुनते हैं इज इन हॉट वाटर मीन्स वो मुसीबत में, इन ट्रबल. नेक्स्ट, होल्ड योर हॉर्सेस. होल्ड, अगर मेरे को किसी को कहना हो रुकने को, इंतजार करवा रहे हैं, तो ऐसे भी कह सकते हैं आप हाई लेवल में, एडवांस लेवल में. होल्ड योर हॉर्सेस कह के देखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा. आप इंग्लिश सीख रहे हैं अभी और किसी को लगता होगा उनको बहुत अच्छी आती है, तो ज़रूरी नहीं है उनको ये सब पता हो. तो आप मीनिंग भी बता सकते हैं बाद में और आप अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर सकते हैं ऐसे बोल के. आप बोलिएगा मेघराज कल किसी को वेट कराना हो कि रुक जा, तो बोलना और फिर उसके चेहरे का भाव देखना. उसको बोलना होल्ड योर हॉर्सेस. होल्ड योर हॉर्सेस. नेक्स्ट इज ब्रेक अ लेग. ये कब कहते हैं? पहले भी मैंने आपको बताया है. ब्रेक अ लेग, किसी को गुड लक विश करना होता है तो ऐसे कह देते हैं कम ऑन गो ब्रेक अ लेग. आपको विश करना है, कोई परफॉर्मेंस में जा रहा है, किसी अच्छे काम के लिए जा रहा है, गो ब्रेक अ लेग. ये कहा क्यों जाता था ऐसे कि पहले ऐसे मानते थे कि शायद टोक वोक लग जाए, तो पहले ही ऐसे ही कह दो. नेक्स्ट इज स्पिल द बीन्स. SPILL. स्पिल द बीन्स मतलब सीक्रेट बता देना. टू टेल अ सीक्रेट. यार मैंने उसको इतना विश्वास करके बताया था सब कुछ, बट उसने तो सब बोल दिया. तो मीन्स I trusted her so much and she spilled the beans. यानी उसने सीक्रेट बोल दी. नेक्स्ट इज काउंट ऑन. काउंट ऑन. काउंट ऑन मीन्स डिपेंड ऑन. I can count on him. I cannot count on her. मैं उस पर डिपेंड कर सकता हूं, मैं उस पर डिपेंड नहीं कर सकता. काउंट ऑन इज डिपेंड ऑन. नेक्स्ट इज कम टू द पॉइंट. कम टू द पॉइंट मीन्स मुद्दे पे आ जाओ. राइट? सो इट मीन्स टू स्पीक क्लियरली अबाउट द इशू. किसी भी मुद्दे पे
एकदम साफ साफ बोलना. नेक्स्ट इज an axe to grind. An axe, axe, an axe to grind. यानी आप जब किसी को पहचान रहे हो कि वो अपना मतलब ही निकाल रहा है, सेल्फिश के सेंस में भी कह सकते हैं, तो आप बोलोगे, इसका मीनिंग आप लिख लीजिए, टू मेक अ पर्सनल प्रॉफिट, टू मेक अ पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ अ सिचुएशन. तो इसको आप ऐसे कहेंगे, उसको इतना सीधा मत समझ, डोंट थिंक ही इज गलेबल, ही हैज हिज ओन एक्स टू ग्राइंड, AXE. उसको अपना मतलब निकालना है. So he has an axe to grind. Next is arm twisting. ARM, arm twisting. Yani to pressurize someone to do something. Arm twisting means किसी को आप जबरदस्ती कुछ काम कराते हैं, ऐसे पकड़ के लड़ाई में घुमा देते हैं ना हाथ. Arm twisting, to pressurize someone to do something. Next is hands full. Hands full यानी किसी के पास काफी काम हो, काफी बिजी हो, तो आप कहेंगे his or her hands are full. Next one is all Greek. All Greek मतलब कुछ समझ नहीं आता. This is all Greek to me. मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा. So all Greek means incomprehensible. Comprehend होता है समझना, उसी का उल्टा incomprehensible, जिस चीज को आप समझ ना पाए. Next one is apples and oranges. Apples and oranges. What does this mean? This means कि दोनों उल्टी चीजें, यानी एप्पल अलग है और सेब एकदम अलग है. तो जब आप इस तरह से कंपेयर करते हो तो कम ऑन, हाउ कैन यू कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस, राइट? At the drop of a hat. At the drop of a hat means तुरंत. बोले यार, if I ask him to help me, he will do it at the drop of a hat. वो बहुत जल्दी एकदम से हेल्प कर देगा. He'll do it at the drop of a hat. Hands down. Hands down means, you can write down, something is good without a doubt. Something is good without a doubt. तो कह रहे वो सही है. Well, of course he's the best person for you. He is hands down the best person for you. आगे भी लगा सकते हैं, आप पीछे भी लगा सकते हैं. He is hands down the best person for you. Next, hands tied. TIED. Hands tied. आप जैसे हिंदी में भी बोलते हैं हाथ बंधे रहना, तो बोले कि to be unable to help someone. बोले मैं क्या करते हैं, मेरे भी हाथ बंधे हुए थे. How could I help you? My hands were tied. My hands were tied. Hands tied. Next is alphabet soup. Alphabet soup means something that's very difficult to understand. Then you can say alphabet soup. At
the 11th hour. At the 11th hour यानी एकदम अंतिम टाइम पे, मीन्स कोई काम करना है एकदम आखिरी, जब बचा ही नहीं कोई टाइम या कोई उस चीज के लिए वैल्यू नहीं रही, तब आप एकदम आखिरी मिनट पे कह रहे हैं एट द 11th hour. Next is get through. Get through means to get connected to someone. My call is not getting through, यानी मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही. My call is not getting through. नेक्स्ट लिखिए come rain or shine. Come rain or shine. What does it mean? कि जो भी हो जाए. In English you can write whatever happens. Whatever happens यानी कुछ भी हो. Come rain and shine. Rohit will marry Ankita only. यानी कुछ भी हो जाए. Whatever may happen, whatever happens. So come rain or shine. Come true. Come true. कोई चीज जैसे आप चाह रहे हैं और वैसे ही हो जाए, यानी his dream of buying a huge bungalow has come true. यानी ऐसे ही वो चाह रहा था और ऐसे ही हो गया. So his dream of buying a bungalow has come true. Next is a can of worms. Can of worms यानी can तो आप समझ रहे हैं, worms कीड़े. Can of worms would mean very difficult situation या issue. अगर कोई स्वभाव का हो, बहुत शांत हो, तो आप उसको बोलेंगे cool as cucumber. Cool as cucumber. Just 1 minute, I'm getting a call. Yeah. Cool as cucumber. कोई चीज बहुत इजी है तो आप बोलेंगे easy as pie. इसमें as लगा के भी बोल देते हैं, as cool as cucumber, as easy as pie. PIE. ठीक है. नेक्स्ट, अगर किसी को आप पसंद नहीं करते या कोई आपको तकलीफ देता है तो आप उसको कहते हैं अ पेन इन द नेक. इंग्लिश में ही अगर बोलना है तो annoying. Someone who's annoying, you can always say he's a pain in the neck. Annoying is the meaning, you can say in advanced level, a pain in the neck. What does it mean when you say to join the bandwagon? To join the bandwagon, BANDWAGON, bandwagon. It means to follow. To join the bandwagon means to follow. Clear? Okay. I think that should be it within this thing. I'll call it a day soon, very quickly. This is going to be a short session. अगर आप किसी से सहमत नहीं होते, डिसएग्री करते हैं, तो आप कह सकते हैं they don't see eye to eye. EYEI to EY. Eye to eye. या वो एक दूसरे से सहमत नहीं होते, वो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से सहमत नहीं होते. डोंट सी आई टू आई.
राइट? मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं या मैं तुम्हारी बात सुन रही हूं, तो आप इंग्लिश में नॉर्मली बोलते हैं आई एम लिसनिंग टू यू। इसको ही आप एडवांस लेवल में कैसे बोलेंगे? आई एम ऑल ईयर्स, EARS, आई एम ऑल ईयर्स। फाइन। नेक्स्ट इज to run into details. To run into details means to discuss something at length. To discuss something at, यानी कि आप एकदम गहराई में कोई चीज डिस्कस कर रहे हो। They ran into lengths regarding the wedding ceremony, यानी बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया उन्होंने। They ran into length regarding the wedding ceremony, discussing the wedding ceremony. ये थोड़ा सा अलग है और जल्दी से आपने नहीं सुना होगा। A snatch of conversation. A snatch of conversation, whichever way British American Europe pronounce. A snatch of conversation means to overhear a part of the conversation. यानी आप पूरी बात में से कोई थोड़ा हिस्सा आप किसी की बात का सुन लेते हैं, तो उसको कहते हैं to snatch a conversation, which means to overhear. Overhear means सामने से नहीं सुन रहे, वैसे सुन लिया। To overhear a part of the conversation. जैसे कह रहे वो वहां से निकल रहा था तो उसने सुन लिया। So he heard a few snatches of the conversation when he was passing by. अगर आपको संक्षिप्त में कुछ कहना है, in a few words, उसको आप कैसे बेटर वे में कह सकते हैं? In a few words की जगह आप कह सकते हैं in a nutshell. In a nut, N-U-T, shell. In a nutshell यानी संक्षिप्त में, in a few words. Clear? कोई चीज सुनने में ऐसे लगता है ना कहीं सुना हुआ है, पहले भी पता है। Sounds familiar. Sounds familiar. इसको आप कैसे कहेंगे? एडवांस लेवल, rings a bell. R-I-N-G-S, rings a bell. The moment I look at the photograph of this girl, it rings a bell. यानी आपको देख के फोटो लगता है कि जानी पहचानी सी है, देखी हुई सी लगती है। So it rings a bell. A cozy chat, थोड़ी सी रिलैक्स्ड जो कॉन्वर्सेशन होती है, आराम से जो होती है, you can call it a cozy chat. Well, we had tea and then a cozy chat. All right, friends, students, good night. Call it a day finally. Thank you for all those who joined. Thank you to all of you.